Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the earlier video, that is in lecture 22, we have discussed about the present birth analysis. So continuing to that guys, in this video we are going to discuss about the future birth analysis. Means in the previous video basically we have done the calculation to get the present birth. Now in this video we will basically do the calculation in context to the future birth. Guys, okay, so again saying guys, this video gonna very informative to you, and one sure questions will came from this part too. Okay, most probably chance है guys, means एक साल के गैप में तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है. Okay, so be focus on this video very carefully guys. And guys, if you are new here to my channel, support and try to share with more number of friends so that we can help more number of students. क्योंकि guys इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग लेक्चर बहुत कम ही आपको YouTube मिलेगा, ना ही के बराबर मिलेगा. ओके, सो प्लीज सपोर्ट लाइक दिस वीडियो. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो. सो लेट वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर बर्थ एनालिसिस. सो इफ यू कैन रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर वी हैव done the present birth analysis and there we have discussed the two formula. Again in this section 2 we will discuss the two formula. First is that f equal to p into 1 plus I to power n. That is p, f is basically future value and p is present value. At if they have given the 12%, then 12% we will apply. If they will given the time as 20, then we will apply 20. Okay, so this is the basically formula you have to be kept in mind. Now second formula you have to apply, that is the for the getting future birth, that the f equal to a into 1 plus I to power n minus 1 upon I. Or you can also say, means for example, if you have to calculate the future birth at particularly 12% or 20, for the 20 year, then you have to apply this formula. Okay, and as I have already said guys, in future birth analysis we will calculate the future birth. Okay, or what is the basically future amount you can get, or basically anyone can get. Now net future birth, that is the NFW equal to future birth of benefit minus future birth of cost. So जब भी आपको net future birth निकालना रहे, then just you have to calculate the future birth of benefit. Okay, you can say future value of benefit minus future value of cost. So this is the complete formula you have to study. मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये formula अच्छे समझ में नहीं आएगा, but after discussing 2 to 4 question you will get clear cut idea that how to calculate. Let me discuss the first question guys. Example 1. If I invest rupees 1 lakh today, what is the amount I will receive after 5 years? That is at 5%. Means after 5%, अगर कोई एक I की जगह कुछ राम से कुछ भी रखे, suppose Ram have invested 1 lakh today, then what is the value that he will get or he will receive after 5 years at 5% interest? So आप देख सकते हैं पर basically in question you will be asked that what is the future birth? आप ये क्या है, means 5 साल बाद क्या future birth हो सकता है? So that you have to calculate. Let me come to the solution. So p value they have already given, that is the 1 lakh. I interest value they have already given 5%. N 5 means year by 5 year. Just you have to apply the formula that f equal to p into 1 plus I to power n. So after putting all that value, you can clearly get the answer. Even guys in previous questions में means previous lecture में मैंने क्या कर रहा था, present birth निकाल रहा था, इसमें future birth निकालेंगे. Okay. Let me come to the example 2. Suppose if I invest rupees 1 lakh today, so what is the amount I will receive after 5 year at 5% compounded half yearly? So आप ये दोनों क्वेश्चन में चेंज देख रहे होंगे. इसमें जस्ट दिया गया that at 5% मीन्स कुछ नहीं दिया गया, मीन जस्ट यू विल सिंपली यू विल कैलकुलेट as usual means in a normal way. But here they have said that compounded half yearly, compounded half yearly, compounded annually, quarterly. मैं already ये सब discuss कर चुका हूँ. I think 18 और 19 lecture में. Okay, so if you haven't watched our previous lecture, then try to watch that video. After that आप इस lecture में आए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. Okay, कि compounded half yearly के लिए क्या करना होता है, compounded annually के लिए क्या करना होता है, quarterly क्या करना होता है. So first of all watch our previous video. After that please come to this ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. Okay, so let me come to the solution. So p value they have given 1 lakh, I value they have already given that is the 5%. But what they have said that compounded half yearly. Half yearly means divided by 2. Already video में बताया that half yearly means divided by 2. Quarterly means divided by 4. Month yearly means just 1, or you can say just as usual means कुछ नहीं दिया, just you will basically consider as usual. Okay. So interest rate compounded half yearly. So 5% divided by 2, that is 2.5%. n equal to 5 into 2. क्यों मैंने किया भाई, क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली है तो एक ईयर में भाई कितना आपको मीन्स होगा 2, टोटल 2 इंटरेस्ट रेट आएगा. दैट वाई आई मल्टीप्लाई दैट 5 into 2, that is 10. Now just you have to apply the formula, that is f equal to p into 1 plus I to power n. So just we have put it here the all value. Okay, I means परसेंटेज में दिया तो मैंने कन्वर्ट किया इन नंबर. ओके, सो जस्ट
you have to basically divide by 100, so you will get the value 0.025 and n 10 already got, so just you have to do calculation, you will get the answer. Here guys, इस क्वेश्चन में कैच यही है कि you have to basically analyze the question very carefully. Here they are basically asking that हाफ ईयरली. ओके, आप लोगों को लगा भैया आपने एग्जाम्पल 1 में क्यों डिवाइड नहीं किया 2 से या 3 से कुछ से भी. ओके, बिकॉज दे हैव नॉट सेड एनीथिंग मीन्स 1 मीन्स रखेंगे और यू कैन से ईयरली रखेंगे. सो ईयरली में भाई मैं कोई कन्वर्ट नहीं करता हूँ. ओके, बट इन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सो आपको इंटरेस्ट से भी मीन्स इंटरेस्ट को भी डिवाइड करना होगा और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, मैं ऑलरेडी ये कंसेप्ट आई थिंक 18 और 9 लेकर बता दूंगा, फिर से कर रहा हूँ, वो आप लेक्चर देखें ताकि आपको ये अच्छा समझ में आए. लेट वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. If an insurance premium of rupees 5,000 is paid every year for 5 years at 5% rate, means interest premium by has to be paid, okay, at 5,000, means 5,000 is paid every year for 5 years at 5% rate. mean time दिया गया है 5 year, interest rate दिया गया है 5%. Then what is the amount after 5 years? So after 5 years, basically they are asking that what is the future birth after 5 years. So just you have to apply the formula guys. That A value they have already given 5,000, I value they have already given that the 5%, n they have already given that the 5 year. So just you have to apply the formula of this, that is the second formula, f equal to a into 1 plus I to power n minus 1 upon I. आप लोग लगेगा भैया 5 year applied here the formula second. आपको कैसे पता चलेगा? कोई जादू तो नहीं जान रहे. सो भाई मैं कोई जादू वगैरह नहीं जानना. ओके, आपको पहले क्वेश्चन में मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई भी इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग लेक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दैट थिंग दैट दे हैव गिवन. सो दे हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ ए, अमाउंट, इंटरेस्ट, एन. सो ए आई एन पता है, मीन्स आपको यहाँ पर दिमाग में मीन्स चला जाना चाहिए दैट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर भाई ए आई का रिलेशन में है. ओके, इफ दे हैव गिवन द सिंपल वैल्यू, मीन्स इफ दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ जस्ट आई एन आई मीन्स जस्ट दे हैव बेसिकली गिवन द इंटरेस्ट एंड टाइम और प्रेजेंट वैल्यू जस्ट, तो आपको अप्लाई करना होगा फॉर्मूला 1. बट अगर आपको अमाउंट दिया तो फॉर्मूला आपको 2 लगाना होगा. सो दैट्स वाई आई हैव कैच दैट. ओके, तो इस तरह से आपको भी एग्जाम में भाई कैच करना है. ओके, सो अगर आपने ये कैच कर लिया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जस्ट वी हैव पुटेड द ऑल द वैल्यू एंड जस्ट वी हैव गॉट द आंसर. ओके, रिमेंबर गाइस 5% आपको यहाँ पर परसेंटेज मीन्स कितना होगा 0.05. ओके, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू. सो आई होप क्लियर. लेट मी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज बेसिकली लिटिल बिट ट्रिकी एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है. ओके, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें. ये बेसिकली आप कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, so what are the question saying? A company has 2 investment option with details as given in table. If interest rate is 8%, find which option is better on the basis of NFW, or you can say net future worth analysis. What is basically better option? अगर आप previous lectures को recall कर रहे हैं, then there we have already discussed about the present value, present worth analysis and what will be the best option. बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया. ओके, सिमिलरली यहाँ पर पूछा गया that there are 2 option. Okay, so you have to basically calculate that which option is better. So they have given option A, initial investment 10 lakh, annual revenue 1 lakh and lump sum return after 5 years. Means total return by 20 lakh expected है. Similarly for option B, amount is 12 lakh. Okay, means initial investment by 12 lakh है, annual revenue 1,20,000 and lump sum 18,000. So कौन सा पाथ भाई कंपनी को फॉलो करना होगा? So हेयर आप कुछ हिंट में आपको दे देता हूँ. ओके, सो NFW ऑफ ऑप्शन ए विल बी व्हाट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर एनुअल रेवेन्यू प्लस फ्यूचर लम्प सम माइनस फ्यूचर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके, मीन्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया दैट फ्यूचर वैल्यू आपको जब भी निकालना रहे, ओके, सॉरी नेट वैल्यू निकालना, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द एनुअल रेवेन्यू, देन यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द फ्यूचर एंड जस्ट माइनस दैट. ओके, सो लेट मी कम टू द सॉल्यूशन. आफ्टर दैट इट विल बी क्लियर. सो सॉल्यूशन के लिए गाइस आपको मीन्स मैं ऑलरेडी इसमें मीन्स हिंट वाइज सब कुछ आपको बता दिया किस तरह से वो सॉल्यूशन निकालना. जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन हियर. ओके, मीन्स नेट फ्यूचर बर्थ ऑफ ऑप्शन ए इक्वल टू फ्यूचर बर्थ ऑफ एनुअल रेवेन्यू प्लस फ्यूचर लम्प सम माइनस दिस. सो जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस ऑन बोथ ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, एंड आफ्टर दैट जिसमें भाई ज़्यादा वैल्यू आएगा नेट फ्यूचर बर्थ यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन. ओके, सो मैंने इसमें भाई बस एक ही पार्ट का मीन्स ऑप्शन ए को कैलकुलेट किया, ऑप्शन बी आप कैलकुलेट करें एंड आफ्टर दैट टेल मी इन अ कमेंट अबाउट दैट विच ऑप्शन विल बी गुड. ओके, और विच ऑप्शन इज बेटर. सो जस्ट कमेंट हेयर. ओके, ताकि मैं समझ में आ जाए कि दैट या यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन 2. क्योंकि आज बट मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग. ओके, ट्राई टू सॉल्व विद योर ओन. मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, जस्ट गो टेक अ पेन पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व दैट.
Let me come to the next example, that is the example 5 guys. So friend, what is the example saying? That a man owns a plot. He must decide that which of the following alternative to select in trying to obtain a desirable return on his investment. Means कोई एक कंपनी, कोई एक मैन है भाई, कोई एक आदमी है, okay, and he basically wanna decide that which alternative is the best. Okay, so means basically वो चाह रहा है कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ so that it will be good for you. Okay, so they are basically they wanna analyze that. Okay, so evaluate the alternative based on the future birth method at interest rate is 12%. They have given the value that first cost is 20 lakh for building gas station and second means for building ice cream stand 36 lakh. Okay, means basically एक कोई आदमी भाई उसको दो पाथ है, एक कि उसको भाई एक गैस एजेंसी खोलना है एंड एक अदर दैट आइसक्रीम स्टैंड बनाना है, तो किसमें भाई बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट ही विल टेक ऑप्शन. ओके, सो दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट एनुअल प्रॉपर्टी टैक्सेस फॉर बिल्डिंग गैस इज 80,000 एंड फॉर बिल्डिंग आइसक्रीम स्टैंड इज 1,50,000. सिमिलरली एनुअल इनकम इन रुपीज फॉर बिल्डिंग गैस इज 8 lakh एंड फॉर बिल्डिंग आइसक्रीम स्टैंड इज बेसिकली 9,80,000. लाइफ ऑफ बिल्डिंग बाई 20 ईयर 20 ईयर मीन्स लाइफ दोनों का सेम है. सो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा? सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर बर्थ एंड आफ्टर दैट in whatever the option you will get a higher value, you will basically choose that path. You means a man will basically choose that path. So let me come to the solution. So alternative one is basically what? Building gas station. So building gas station, first cost they have already given that the 20,000. Okay, sorry, 20 lakh. Net annual income equal to annual income minus annual property tax. Means net annual income कितना है आपका? Total annual income आ रहा है, उसमें आप property tax यानी जो भी tax है उसको subtract करेंगे, you will get value. So just we have done this. Okay, means 80 lakh minus 80,000. Okay, 80 lakh minus 80,000. Just we have do the subtraction. Means इसको भाई मैंने annual income से annual property tax को minus किया. We have got the value that is the 7,20,000. Okay, amount life equal to 20 year, that is n they have given. So interest rate 12% compounded annually. They have already provided in the question that 12%. कुछ भी नहीं दिया गाइस, मींस कंपाउंडेड एनुअली ऑलरेडी बताया. अगर देता रहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो मैं इंटरेस्ट को डिवाइड करता 2 से, ईयर को भी मल्टीप्लाई करता 2 से. ओके, सो बी केयरफुल हियर. तो कुछ नहीं दिया, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू दैट द फ्यूचर बर्थ अल्टरनेटिव फॉर वन फ्यूचर बर्थ इक्वल टू -20 lakh एफ अपॉन पी एट द 12% 20 प्लस 7,20,000 एट द रेट 12% 20 मीन्स 20 ईयर के लिए भाई 12%. मैंने दोनों पे कैलकुलेट कर दिया. ओके, so after doing the calculation you will get the value. Okay, that is the 3,25,000. इवन गाइस ये हिंट मैंने ये आपको मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर दिया. ओके, आप फॉर्मूला एक जगह कहीं रख ले so that it will be easy for you to get that. Okay, so just we have applied the formula and we will get the value 3,25,000. Okay, let me come to the alternative 2, that is for setting up ice cream stand. So ice cream stand के लिए भाई 36 lakh दिया गया. Again here we will calculate the net annual income, that is the annual income minus tax. So just we have done that. And we have got the value 8,30,000. Life 20 year. Interest rate 12% compounded annually. मीन्स दिया गया that interest rate दोनों में सेम है. So just we have applied the formula in the same way जैसे ही मैंने previous में किया. Just we have done all that things. Okay, means at 12%. So we will get the value as 2,50,000 7,700 and something we have got. Okay, so future birth of alternative one is greater. Okay, future birth of alternative one is believe what? We have got the value for alternative one, that is the 3,25,85,440, and for alternative 2, that is for the building ice cream stand, we have got the value as 2,50,77,560. So in alternative one basically we are getting the more value. So setting the what? Setting the building gas station, means for the building gas station, that will be worth it. So he will choose the setting of gas station rather than ice cream stand. So I hope clear guys. Let me give one example to you. This is the basically homework for you. You have to calculate that a person invest rupees 10,000 today at 10% interest rate. What will he get after 10 years if interest is compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly? Okay. So according to that आपको different condition में आपको निकालना है value. मैं आपको हिंट देता हूँ guys, that मैं already बता चुका हूँ that if they are annually means कुछ नहीं करना, just you have to apply the formula. But if semi-annually or you can say half yearly, so you have to basically divide the interest by 2 and year with multiply by 2 and quarterly means divide by 4 multiplied by 4 टाइम को कर देंगे एंड जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. ओके, आपको सॉल्यूशन ही मैं आपको ऐसे लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ही मैंने दे दिया. सो ट्राई टू डू विद योर ओन. ओके, इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम आई विल basically solve that. Okay, so I hope clear. Let me come to the next question, that is the question number 7. So what is the basically they are saying
that find that which choice will be better. Future birth that are given at the interest rate 12%. So what are the basically the value or data they have provided? Machine 1 and machine 2. Okay, so actually in this question they have given the two machine and we have to basically calculate that which choice will be better. So initial cost is 40 lakh, return per year 8 lakh and life is 4 year. For machine 2, initial cost is 45 lakh, return per year is 10 lakh and life is 4 year. So which option will be best at the interest of 12%? Let me come to the solution, guys. So net future value of machine 1 equal to future value of benefit minus future value of cost. So future value of annual return means that will equal to what? Future of annual return minus future value of initial investment. So just you have to apply the formula and calculate the value, that is the amount. So that is equal to A into 1 plus I to power n minus 1 upon I, and for the initial investment will be what? P into 1 plus I to power n. So just we have apply here the formula and do the calculation. Now similarly net future value for machine 2, again just amount they have already given at that 10 lakh and just we have apply the formula here and we have got the value something that is 23 lakh. So in whichever the value we are basically getting the list, that will be the best option. Okay, so I hope clear. कुछ नहीं guys, जो भी मैं already previous question बताया, just you have to follow all that instruction and you have to solve by your own. Okay, बहुत easy question है. If you will face any problem, then feel free to ask here. Okay, I have already given the hint. Now guys, this is the question 8 and what are basically questions saying? A Suburban taxi company is considering buying taxi. Means so कोई एक taxi company जिसका नाम है Suburban. They are basically planning to buy taxi with a diesel engine instead of petrol engine. Okay, so दो भाई उनके पास ऑप्शन है, डीजल इंजन का टैक्सी खरीदे या पेट्रोल इंजन. नाउ कार्स एवरेज इज 50,000 किलोमीटर अ ईयर विद a useful life of 3 year for taxi, the petrol engine and 4 year for डीजल टैक्सी. मीन्स पेट्रोल टैक्सी के लिए भाई 3 year है और 4 year है भाई डीजल टैक्सी के लिए. Other comparative information are in the next slide. Means next slide I will show you and determine the more economical choice based on the future birth method of comparison if the interest rate is 15% compounded annually. So they have provided the two alternative. Okay, मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ that एक कोई भाई sovereign taxi company है. Okay, and there are two options available to them for purchasing a taxi. First option is that they wanna purchase a diesel taxi and second petrol taxi. Now the average kilometer or distance they have already said that 50,000 and interest rate they have already given that the 15% compounded annually. Okay, another value they have already provided in the table form, that the vehicle cost for the diesel, for petrol, fuel cost per liter, that is rupees 9 for diesel and rupees 24 for petrol, mileage 30 है diesel and petrol 20, annual insurance premium that is the 500 and for petrol is 500, salvage value 70,000 and 1 lakh. So they have already provided all the detailed value. Simply you have to basically calculate here the future birth. Okay, and you have to basically select that which option will be the best. Okay, so again guys, coming to the solution of this, annual cost of diesel car equal to what? Annual cost of premium plus annual fuel cost. So annual cost of premium already they have given that the 500 and annual fuel cost. So just we have sum up here, that is the 500 plus 50,000 upon 30 into 9. ये भाई मैंने क्या किया, एनुअल फ्यूल कॉस्ट प्रोवाइड किया. ओके, मीन्स फाइंड आउट किया एनुअल फ्यूल कॉस्ट कैसे प्रोवाइड किया, मीन्स फाइंड आउट किया दैट इज द डिस्टेंस दे हैव गिवन, दैट इज द 50,000 किलोमीटर and rate they have already given, that is the 9. Okay, so just we have do the things. Okay, means 50,000 divided by 30 into 9. 30 को मैंने क्यों किया, क्योंकि माइलेज कितना भाई 30 का है. ओके, दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड द टोटल डिस्टेंस अपॉन माइलेज इनटू 9. 9 मीन्स इतना भाई फ्यूल कॉस्ट लगेगा. ओके, मीन्स पूछने का डिस्टेंस डिवाइड बाय माइलेज, उससे क्या निकल जाएगा आपका टोटल पेट्रोल कितना खर्चा हुआ एंड जस्ट वी हैव मल्टीप्लाई दैट विद फ्यूल कॉस्ट. ओके, दैट इज द 9 here. Similarly for petrol car we have find it. Okay, there again distance is same but mileage is 20 multiply by 24 क्योंकि 24 भाई यहाँ cost दिया गया है. Okay, fuel cost per liter for petrol 24. So just we have done that and we have basically got the value. So diesel vehicle run for 4 year and petrol for 3 year already given the question. So we basically take a common study period for 4 year. Means दोनों का भाई 4 year करे, तभी जब कॉमन टाइम टेन्योर लेंगे तभी तो आप कंपेरिजन करेंगे ना. मैं ऑलरेडी बताया दैट जब भी आपको कंपेरिजन करना है देन आपको पैरामीटर सेम लेना होगा, मींस टाइम सेम लेना, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं कि भाई आप किसी को 2 साल के लिए कंपेयर करें, किसी को 4 साल के लिए करें, तो ऐसा नहीं है. दोनों का भाई टाइम पीरियड सेम रहना चाहिए, देन वी कैन डू कंपेरिजन. सो नाउ लेट फ्यूचर बर्थ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट
For diesel vehicle after 4 year 15%. Now future value of initial cost plus future value of annual cost minus future value of salvage value, that will be equal to what? Net future worth. So just we have apply the formula and do the calculation, and after that we have got the value as this. Okay, that's the 8,81,900. So now friend, similarly we have done the calculation for the petrol. Okay, means here we have done the calculation for the diesel, and now for the petrol engine after 3 year at 15%. So future value of initial cost, that is they have already given, that is the 440. Okay, something they have already given. Now similarly doing the other value, that is the future value of initial cost plus future value of annual cost minus future value of salvage value. Okay, so they have already provided salvage value as 1 lakh. Okay, सब डिटेल भाई आपको क्वेश्चन में दिया गया salvage value. So just we have put in all that value by seeing the graph, seeing the question, and after that we have got the value this. Okay, so net future worth in terms of cost for petrol vehicle after 4 year at 15% will be what? So whatever the value they have given, and just you have to apply the formula, that is the present value. Okay, or you can say future value into 1 plus I to power n, that the time they have already given, that is 1, and percent at the 15%. So just we have to do the calculation, and after that we have got the value of this, that is the 13,46,701. So आप देख सकते हैं that for the petrol engine we have got 13,46,701, and for diesel engine we have got 8,81,000. So clearly here means path through, or you can say petrol engine will be worth it for us. Okay, आप देख सकते हैं फॉर्मूला कहाँ से मैंने अप्लाई किया. जस्ट वी हैव डू द कैलकुलेशन. ओके, एंड इट विल बी बेसिकली इजी. ओके, आप ध्यान से देखिए लेक्चर को, आप ध्यान से मीन्स स्लाइड्स को देख लेंगे, देन इट विल बी मच क्लियर टू यू. So this is the complete lecture of future birth analysis. I hope guys video gonna informative to you. If you end up with anything, feel free to comment here, ask here, and I have already given 2 questions as a homework for you. Okay, मैंने आपको हिंट भी प्रोवाइड कर दिया. ओके, मीन्स क्वेश्चन 8 भी आप भाई आपका होमवर्क ही है. ओके, पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा दिया किस तरह से सॉल्व करना, एंड पार्ट 2 यू हैव टू सॉल्व बाय योर own. Okay, if you are facing any issue, feel free to ask here, comment here, I will reply. Okay, but I think that I have tell you the sufficient concept, and I have also done the various numerical question. That is enough for you for attempting all these questions. Hope informative to you. If you have doubted anything, feel free to ask here, and must share this video with more number of friends so that we can help more number of students. And guys, please support, subscribe our channel. Okay, because आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि लेक्चर भाई बहुत इकोनॉमिक्स का कम है. ओके, सो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, देन इट विल बेसिकली हार्ड फॉर मी टू मेक such type of video. Okay, and also providing note. So I hope you will like this video, share with your friend. Meet you in the next video. Thank you.